Praise the Lord. Naruem looking at the Happy Easter Sunday बोलते हुए मैसेज प्रभु का मैसेज फिर सा मैं लेके आया हूँ मौदूना उनका जो काला जो जॉन का चैप्टर 20 verse 11 लोग का काला 14 लोग का है. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you looking? Why are you crying? They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have been put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there. I just want to focus in 20 verse 14. At this, she turned around and saw Jesus standing there. Yadlo Mary Magdalene Jisu ne rumotola tola melakuma be kabla mel dakubete hogo doye din chiru tola mela kabla daktore kula Jisu ne kapaka Jisu ne kapaka oka Jisu ne auje kapakaku standing dakto kapakaku rajlo him barshum puridula ye barsh ko lete hue आज का मैसेज होगा the experience with the Lord, the experience with the risen Lord, the experience with the risen Lord. Munuga Jisu ga garab nammem munuga awe change kunam ka awe himpa kunam experience प्रभु का साथ जो उद गया ला उसको हम experience करना ये आज का मकसद है. मुनु ये एस्टर संडे बोलने से एस्टर संडे गुड फ्राइडे ये बहुत मिलता जुलता है और सेम लाइन लोकेर तो हम उनका जब यीशु मसीह को लोग किस किस दिशा से इसको पहचान लेते हैं. यीशु ने ये तो योयल में तो some says he is a great prophet and some says he is a son of God and the and some says kaya kata mento bugam chone yirnega awane chone to atugon kuda architect kata mento he is a chief cornerstone namna jo mona kata bugam chief cornerstone ala bugam mento okay carpenter yo carpenter yo furniture yo mona kata he is the door bu rab ko elemento od ka doctor kata mento doctor kata bugam explain to Jesus ne yer kom he is a great physician mupone ala mento ok hege educator gatta mento teaching line lo ne he is a great great teacher ala mento educator gatta great teacher ala mento paramar gatta dirikren gatta mento he is a sower and the harvester mulana okabu ganda Eggar be parmaramento, eggar be munu theologians adavento. He is the author and finisher of our faith. Munuga rirepa okka munuga ritire magaga ala theologian gadamento. Oka sinner gadamento, he is the Lamb of God. Papna gadamento kumunjo good prayer to ikka sinner. Jesus Christ bu papne lilenta baatu tumun. Sinner gadamento, he is the Lamb of God. He is the Redeemer. Lamb of God. Yirnaga lempa unam lilenne elemento. Erkom munu Christians. Hello unga Easter Sunday ago munu Prabhu is to go as a Christian. What we are going to present? Munu yola jisu ne present ko. I will explain adakadakka. Nonu munu yom explain to Jesus Christo ne. Munu Christian we must say he is the Son of Living God. The Redeemer and the Sustainer. The one who died and the one who resurrected from the dead. He is living and eternal God along Christian present no juga. Hokching un karim Mary Magdalene hoga bu ada group में experience मुझे experience नंबर चिन किस तरह वो experience किया क्योंकि वो दिल नहीं मान रहा था. प्रभु यीशु गुजर जाने के बाद दिल ही नहीं मान रहा था
मतलब जाने को मैं इल्ले कुमातो तो जिसके कारण वो प्यासा था मैं भाई आँखों ने काला कपल लंग मैं एंजल कापा का एंजल कापा को नेक्स्ट लोको किलो जीसु ने मैं कापा काको that is experience he experienced with the Lord unogo कापा का ये मनु इधर कम munu as a Christian munu good predicam chenka Esther Sandelo अलग दोई उन करे वो मैसेज उन आधा कदम पारा आधा कदम तो ये मुन पारा लेकिन वो साइड से वो का पहले लोग के मनी में जिला में in order to experience with the region Lord उन वो जीसु के तुरप कुन में मुन experience नम लगा बे वो का knowledge क्या करना चाहिए living the resurrection life we need to live a resurrection life no resurrection life like August समय को Mary the Magdalene munu Thomas munu team है Thomas को किलो रिपेन ला मदन न पुचिन munu team है जीसु रे कोलो रहतो के जीसु तो लड़ रहतो इजा तो जीसु रे कुमा अभी तो जीसु इस दुनिया में नहीं है तो हम और आप और हमें मसीहा लोग उनके से एक्सपीरियंस करेगा in order to experience the risen Lord we need to live a life of resurrection life munu turn life पे मुझे गलती प्लेगर को turn life पे men do believer are to live a resurrection life munu believer से munu resurrected life या resurrection life पे munu reply करे एक resurrection life पर हम true word और deed munu का अगम लोग छिन munu का अगर लोग छिन munu resurrection life turap munu life पे munu गपजी play करे munu का the way we live, the way we talk, the way we walk, munga innam, munga renam, munga mennam, naru munu resurrection life be, munu gupiji plegre. Yoga rive Colossians chapter 3 verse 17 lo mentu. Whatever you do in word or deed, do for the glory of God. Yoga जो भी बात बोलने से भी और जो भी कार्य करने से भी प्रभु का महिमा के लिए ही करो. Yogurila minna chit sorga minam tapa kapa nam lagape undu again undu resurrection life undu experience living a resurrection life embe undu rekuma bolo resurrection life pe undu rekuma bolo undu yadigo Esther Sunday am celebrate kala kuchin niye nirkare ari chem riba minche membe undu new living new style undu girap jirap embe undu gipajip lage undu life embe new ba उन गे पजीप लगे उनका मैनम मनम अदक पलगे रनम बनम अदक पलगे मतलब resurrection life नम मने और all has gone उनका पूर्णा दीने को तुम पलगे उन पूर्णा अकुयरा उनका पक पलगे उन अली वे गे पजीप लगे उन मैनम मनम अदक पलगे रीरिचा अदक पलगे मिनी मिंचा अदक पलगे that is called a resurrection life Christian रिगरे रिचियम रिबे मिंचियम मेंबे gitu जीवन गिवर हम तो ये कैसे करके हम लोग resurrection life होगा मैं उन्हें तो लचिन उन्हें हम resurrection life बिरमारा अला उनका नहीं उनको लगा resurrection life उन्हों in order to be experience with the risen Lord उन्हें यीशु के तुरकुर कुन में उन्हें experience नम लगा पे उनका first point living the resurrection life पे अला वो first point होगा मिंदा में लेकिन उदा नरुएम happy Easter Sunday Adulan में तन्नरुएम कुमरू जिला यरनगा होम को लकिंग होता मिंजरा प्रभु का वचन फिर चलिए देखते हैं John Gospel according to John chapter 20 verses 13 and 14 They asked her, "O man, why are you crying? They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. Hogo ngokar ko ngomen lamen machin. Hogo yaddogo Mary Magdalene me. Jesus ne jiro ko kebanyiwulo rum torekula. Me mela ma ba inyo kuma kabla tak bede. Hogo big experience namme. Jesus ne me kut kapan namme. Oko kebe me yo me yang oyo me poritopti me kalang me I like this verse 14 At this she turned around and saw Jesus standing there me yad lo kabal dak dola kan me
Jisu ne midak to be kapaka. Higim akom jum lagalan me diloga munuga Esther Sunday hogo munuga topic hai the experience with the risen Lord. The experience with the risen Lord. Mary was experienced with risen Christ. Mary me Jisu ga garab na me experience ka. तो मेरी जरकुमा ओके बुलगा Thomas munuga atire रकुमा Thomas में मजेक मालाची में लास्ट लो मजेक तो को मुन atire रकुमा तो हम क्रिश्चियन कैसे एक्सपीरियंस करिए मुन एक्सपीरियंस में लग दो अगर मुन टॉपिक लो अगर सब पॉइंट लो इन ले रहे टॉपिक द एक्सपीरियंस विद द राइजन लॉर्ड का टॉपिक है और इंदुलन में जीसु ने यो अब अन्य को Jesus ne adak be mun explain to some says he is the prophet, one of the prophet. Atu go na ni ko to atu go even he is a thief muyam chone lachimento oka furniture mone namna jo mone gatte he is the door muyam rab go lachimento oka buam bread mone yo gatte lubroti yo mone gatte he is the bread of life elemento oka buam doctor gatte he is a great physician ala Jisu ne mento tom ji mopok ang jaba monne educator gatte poralika ne gatte ni chenne pan gatte he is a great teacher chinki pakung ne teacher elemento egaru be mun urikere ne gatte farmer gatte he is a sowers and harvester mu lenne ko ka bukanne ko egaru be mun theology gatte ko he is the author and finisher of our faith bible poring gatte mu ke paid ke merka ke mu rirepe oka ritre chinkoto tamba adakata ba Jisu ne explain to jelo mun Christian Esther Sunday alojogo what we are going to present Jesus Christ. This is not what we are going to say. अभी क्या बोलेगा? चलिए क्रिश्चियन हम लोग बोलता है कि he is the son of living God. मैं दूर नहीं सो रहा. He is the redeemer. He is the son of living God. He is the one who died and buried and rose again. मैं ये दी जिकुबेदी रुकुबेदी ओके तुरप कुने. That is called Esther. Numero good pray dia mulu cengka. Good pray the Lord sinner kadamento. He is the Lamb of God. Good pray the Lord. Jangan Esther lo. He is the living God. Turiyarna rutume. Hoko munu karem. He is he rose from the dead. Me ibu lo katurap kanam. Kaha me bolai. Dr. Luke is a physician. Me presento in the book of Acts. Okay, book of Luke lo. Me Theophilus ne Dr. Luke me minto me agent Theophilus ne me minto Jesus Christo ka garab nambar yang pura turap kun me book of Acts la Luke lo ditelemento aga parts proof kun ne Jesus ka turkur ka kun me second proof kun ne munu Jesus ka turkur ka kun me Luke chapter 24 verse 36 Luke chapter 24 verse 36 lo Jesus me ka disciple ga atir lo adola peace be with you ala Jesus me aligla agam japto Luke 24 verse uno 36 lo ka karem Jesus Christo me aligdola emba me presence lo takam peace be with you atla me disciple ka presence lo Jesus me aligto ala kapadu oka aru bogong uno kaparem 1 Corinthians ka chapter 15 wa 1 Corinthians ka chapter 15 lo ka karem Apostle Paul me Corinthians mondolium what I have received I pass on to you ngoyogo chembedi ngoyogo akakubedi nonuglo potay dun Jesus me Pablo Pablo me cross logica o kabiyam ruka o kabiy turkur ka ko alam titelam Paul me experience to o ka 15 ka verse 8 lo mento he appeared in me me ngoklo even appear to alam me Jesus Damascus lo way of Damascus lo all impede over Jesus me good mento ngoklo chingkar gito ala Jesus me mento gito that all indicates hikinaru hing kar kong Jesus me ga akane Jesus me ga turkur kun mengun kapatu ka John ga chapter 20 verse 27 28 lo chingun lagi ola kapare bolo chin Thomas me
yaddo ko jisu ne ajenga da garap to ko beli ngo bisang ma yaddam ngok buga je kala kili piccolo ko ngok chilluk मार दे और bisang ma Thomas में तो हम विश्वास नहीं जब तक मेरा आग उसका फार्म में नहीं डलने से यीशु मसीह 20 का वर्स 27 28 लो Thomas गला तो Thomas buga lagi ilen to la put your finger on my palm nok ala ke ngok lo ilik to kala ilen to then Thomas my Lord, my God, and my gublik to la may kumtaku no gusto me kwela. Jesus Christ mento. Blessed is he who believe in me without seeing me. Blessed is he who never see me. Mum ye mun ayana me munu kama gare biswas ne katte. Thomas ne mento no kagal bisang ne. You see and believe me. Blessed is he who don't see and believe me. Kama gata bisang te ega deng yo asliela jisu men Thomas ne jabri to. That all indicates me garab la inla para kunam ala ilik to kanang ate jisu munu garab ka ku anong kapado munu praise the Lord ala kong teru munu jisu men garab kunam. Ogong munu jilong munu topic munu ko manku munu hiloga topic ko the experience with the risen Lord. Munu meko jo menka munu jatu munu je experience lakuma अभी munu जीते ही हम लोग experience करना है munu ये कातम पर लगे जिसु तुरकुर का अनमें munu आगो मारो मेंता munu अगर लोग munu कातम पर लगे first point we need to experience munu अभी experience पर लगे the risen Lord experience number first living the resurrection life munu अभी resurrected life बरदोला munu कातम पर लगे munu Lord Jesus turkur ka ko namun katem pelagi higi ngunu ga first point God first point ngunu living resurrection life believers are to live in resurrected life ngunu believer ngunu turkur na agar amir be ji pelagi turkur ku na ngunu life be pelagi ngunu इसका मतलब है कि ngunu पाप लोग ngunu जिका ngunu गुड प्रेत ngunu पाप में हम मर गया दफना दिया और उससे हम फिर उठना चाहिए ngunu jilik ka ngunu turkur ngunu ruka ngunu garap pelagi o garibe ngunu Romans ka chapter 3 verse 23 lo all have seen and fall from the short glory of God unnaru all have seen and fall from the short glory of God yirne ka mahima lo unnaru chika लेकिन Romans 6 verse 23 में फिर ये बोलता है कि the wages of sin but the gift of God is eternal. The gift, what do you mean by the gift of God? The gift of God in Jesus himself. Munu naru hai Pablo jito kintu God gift jikunam me munu ga yoku eternal life ko. Aga munu ga Jesus Christ is a gift from God. John 3 verse 16. He munu ka par. Poglaga munu yachin resurrected life nam laga munu new person, new style munu gunam jinam manam monam ada rina reidocha the way of walking, the way of talking, the way of behaving, attitudes. Naru ang resurrected life beriplag. Jine agar baga jimadan agar baga beriplikuma. Ok Pablo ren agar baga beriplikuma. Yogo milna chin, yo agar baga beriplikuma. Colossians chapter 3 verse 17. Whatever you do in word or deed, do it all for the glory of God. जो भी कहेगा, जो भी करेगा, प्रभु का महिमा के लिए. अगर resurrected life या resurrection का life पे मंदुले आजेंगे तो जिकीकु उन अकन्ना गुनाम जिन्हें गपलेगा First Corinthians का chapter 3 verse 2-3 लो चिमेंटो You are my letters no ngok letters the living Bible angol lagu gato inla lamachin I am gato inla machin alag gato inla lamachin we are the living letters mo okanno God के living letters है ओकला काजू resurrected life पे मुनु गिला जिला चुका तुरकुर कुने life पे मुनु गिला चुका है First point and second point in experience with the risen Lord long second gomna nanaku to live a victor living yeah victorious life victor living and amana we need to win the sin munu papam bergumpalage munu papam walking in freedom from sin munu remur lokang munu regumpalage remur ba munu lera na munu torgum epak paleg duku alamane habit lokang munu chorna hai
biri tingon am ngono ebi chorna hai poka tingon am ebi tingon chorna hai alama bagi yem chenam beno ngono chorna chahiye nijir jo yaar me ngono pak pel lage tani mo ko ga kawatari memory सब कुछ है दिस ऑल आर सिंस ये ngono nam tani mo ko tumre इसको हम लोग जीतना चाहिए poka tilu nam oka dumi dolu nam oka nijir jo yaar nam oka lub lalach ये सब हम जीतना चाहिए we need to live a victorious life elang uno gomina ne uno god ge experience uno ga big regional experience nam laga pe other masi untu ida uno estar lo jisu garap ka mumla la word se nahi hoga we have to present the people in with action ago maro lo kar kumar hai ago maro se nahi hoga uno कार्य में लाना पड़ेगा we need to put into action ago me reply rakho Matthew chapter 5 verse 16 lo chimento preaching lo mencho you are the light of the world let the light shine on you so that the people may see in Christ in you Matthew 5 verse 16 nok light u to ka so that people will see Christ in you nok amir no light u to ka kena lo light u ram na ru ka pa do ka change do nok no light u to ka jisu ne no ngi lo no ka pa de aina lo yo sang kar kom ayo ka kur jidu te ngo light ra kom ngi no ka jisu ne ka pa mut ka let your light shine before the man okla ngono aga that is a victorious life ever ngono ya ngono amba guri bol ngono victorious life ka god gal ga gunam jin ma lang men to the second point we need to live a victorious life ka Galatians chapter 2 verse 20 lo tu men to hogo mintu por hogo matlab crucified ngo god jisu galo already crucified ka ngo yo gordo de Christ is in me I have already crucified with Christ I have no longer I but Christ live in me Galatians 2:20 ngo kusibrema ngo live gi jisu ngo kloraminga tu god ngo kloraminga tu jisu ngo du kloraminga tu that is the victorious life praise the Lord ekana life हम लोग जीना चाहिए हमें उन रिप्लाई कर में लगता तब जाके उन victorious life योग रिलेशन God मेरा साथ है ये ने उन लोग का तो है Romans chapter 8 verse 32 के मैंने हमको if God before us who can against us Romans 8 verse 31 32 में if God before us who can against us यदि प्रभु मेरा पास है तो कौन हमको क्या करेगा that is a confident life and that is a victorious life अलग उन इंदु ने तो victorious life हम क्रिश्चियन जीना चाहिए Philippians का 4 verse 19 बुक में नाम पे God shall supply all my needs according to His riches of glory मेरा सब जरूरी को प्रभु ही देगा Philippians का 4 verse 19 बुक में नाम ये क्रिश्चियन का victorious life for the last point हम बोले कि experience His presence in order to experience with the risen Lord we have to experience in His presence ngunu God presence ngunu jam me nam rigum dogum nam victorious matlab rigum dogum nam Christian ne ka aina ne experience in His presence big presence ngunu impanam kaya ne Christian ka we don't feel God's presence kaya girja imumdu tanam jimumdu opringam jimumdu lekin God ka presence impakuma God ngukal dudal menjima atu ne God ngukal kadol ajin change ma we feel empty we feel dry उन्हें सूख चुका है क्रिश्चियंस गाना में मुम लचिन अगर अंगर मुम लचिन चार से मुम लचिन उन्हें आत्मा में ड्राई सुखापन हो गया उन्हें और उन्हें we need His presence God मोकल का दो God मोकल रखो रमीन के दो अल्लाह उन्हें इम्पाप लग रहा है उन्हें में तो Psalm के 23:1 बुक में नाम पे Psalm के 23 नंबर 23 बुक में नाम पे the Lord is my shepherd I shall not be in want He makes me lie in green pastures that is called the feel the presence of God bang unka paran God the presence of Psalm 20 number 23 be mentu yirna ngok lokatu yirna ngok inkolo imingato yirna ngok kakala menang God the presence of nota appeal pelage Philippians chapter 1 verse 27 Paul ke menamba for me to live is Christ and to die is gain ngok lo Philippians 1:27 ke Paul ke menamba ngok granama yirnaglo jisuglo ngoretu ngok jinamai poyagu mo jisuglo jidak turdak nam that feels the presence of God big God the presence Jesus connection pempan ngunu
God ga presence sam, Jesus ga presence sam experience nam laga to ngunu blessing हम पाप लगे काइयान क्रिश्चियन का experience blessing हम पामाई तो क्रिश्चियन अगर they don't receive blessing हम लोग का अधिकार है blessing देने का पाने का उन्नम ईश्वर God भी blessing हम जिल पर तो लेकिन इतना blessing ही पामा तो इमाम है ये मार बर गया तो उन्होंने blessing का ना क्रिश्चियन को blessed ने क्रिश्चियन को रिप्लाई उन्नत ने क्रिश्चियन को रिप्लाई के उन्होंने ये याद हम experience उन God के presence हम experience है उन blessing हम experience ने God के presence हम करा और का power empower God के power उन्होंने empower है उन्होंने तोरनम लेनम आ रहा है उन्होंने चरणी बा आ रहा है then we feel the experience every wall उन्होंने God के presence हम ओकलो कादो अल्लाह रिगुम गन तोरनम लेनम पकारा ओका God के anointing पवित्र आत्मा उन रिगुर रहे पवित्र आत्मा यदि उन्होंने रिगुर रहे थे God के presence हम empower है उन क्रिश्चियन ने रिमूव रितो रे प्लेइंग मा we first ilong ok topic ang ok gomle the experience with the risen Lord उन्होंने ये टॉपिक था और फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग ये था कि living the resurrection life उन फर्स्ट एंड सेकंड the victor living उन्होंने living the resurrection तुरकुर को नाम गनाम का सेकंड पॉइंट है उन्होंने victor living रिगुम तोगुम नाम गनाम कतार द God के experience हम उन्होंने presence हम feel कुनाम him mendula Menduna munu jina Kristan beriplang ma ok ajeng man Kristan beriplang ma gom tir bedo yigo mega me pinto alo go gari gol inna me malikala driver into gari pirla into drive malika pronlo dula driver am are no ka sok se am ka nam suwe ka no pura sok se purna to gadu be ka driver हाँ सर पूरा पूर्ण हो गया थोड़ा 2-3 दिन एक सप्ताह से नहीं धुलाया 2-3 या एक सप्ताह से नहीं धुलाया इसलिए गन आ रहा होगा ओको लेकिन जूजा बचिन ओप्तांग का जुकुमा पिगमा का जूजा चिन थोड़ा अमुका आदू पर तो मालिक में इनका निकलो सोक्स को निकल के पेको का अगर लालेंगा ड्राइवर है पक्का अमुक जुबा इंदु फिर इंदु अरे आपका गाड़ी में अभी तो गन है क्या हो गया आप सर का सोक्स को फेंक दिया बोला सोक्स में पक्का अमुक जुबे तो और ले ला अमुक जुबे को क्योंकि मैं आले अमुक गन जो आले लोई तोड़ का को आले पूरा नाम सुन को सोक्स को फेंकने से भी उसका पाव में ही गन अभी तक नहीं निकले एक गाड़ी मुझे क्रिश्चियन चिन मर गए मुझे अमुक ने मुझे पिक पकड़ है तो तेले जुका कुमा ले ला अभी तो मेरा क्रिश्चियन है चलिए हम लोग एक ना सोक्स अमुक जो ने मुझे पीले ने पकड़ है अल्लाह ने जुका गोलो तो गाड़ी में गन नहीं होगा अल्लाह क्रिश्चियन बरला जुका तोरना क्रिश्चियन बरला जुका God रेजन तुर्कु को एक्सपीरियंस क्रिश्चियन को बरला जुका दोला होगो एस्टर संडे में से हम नरो प्रोजेक्ट में praise the Lord